First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. In that, participants properly Yogesh Ghodke, Saddam, Nitin Pawar, Rutuja Gomchale, Shruti, Sarika Tatewar, Sneha Gaikwad, Ravina Patil. Now see here, today in this special lecture, today in this live lecture, we have to discuss, we have to solve the problems based on, or the examples based on the homogeneous equation, differential equation with variable coefficients. Okay. So we have to solve the problems based on the homogeneous differential equation with variable coefficients. Agar in the previous chapter we have studied lot of examples based on the homogeneous differential equation with the constant coefficients. Here we shall discuss the problems based on the variable coefficients. In the last lecture we have seen the theorem based on the reduction of the order of a homogeneous differential equation. How to reduce the nth order differential equation into the n minus 1th order differential equation. Then how to reduce the n minus 1th order differential equation to the n minus 2nd order differential equation. And this, there is one theorem, according to that proper substitution we can reduce the order of a differential equation, and this theorem which we have studied in the last lecture. Now up till in this second unit we have proved 10 different theorems regarding the homogeneous, non-homogeneous differential equation with the variable coefficients. Now today in this special lecture, in this additional extra lecture, we shall solve the problems based on this. First of all, I notice that I inform you that you don't write any problem. Only you have to give answer in the chat box of each one what I want to ask you. Then you have to give the answer of my problem in the chat box. You don't write this problem. Okay, समझ में आता है क्या रे स्टूडेंट्स? कोई भी स्टूडेंट्स मेरे साथ प्रॉब्लम का आंसर नहीं लिखने वाला है, खाली चैट बॉक्स में आंसर बताना है. मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करने वाला हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेने हैं, फास्ट सॉल्व करने वाला हूँ. तो सभी ने क्या करना है, सभी ने चैट बॉक्स में खाली आंसर्स देना है. बाद में आप सभी को प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिखना है. या तो आप वीडियो रिवाइज करो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसी के आधार पे आप बाद में नोट्स देना है. ओके. आज्ञा वडवळे, लक्षात आलं वाटतं तुझ्या. ओके. नाउ हियर, now we shall solve the problems based on this. First problem we shall solve. Up till we have studied the 10 different theorems here, and we have to solve problems based on that theorem. Okay. Now there is one important theorem. First we shall write that theorem. Consider, problem. First problem we have to discuss examples on the linear differential equation with variable coefficient. That means we have to solve the problems based on this, or examples based on this, examples based on the different 10 theorems which we have studied in the second chapter for regarding the variable coefficients. Okay. Okay, now see this. First problem, consider the equation y double dash plus 1 upon y, 1 upon x into y dash minus 1 upon x square into y, which is equals to 0.
for x greater than 0. Then we have to find out, show that there is a solution of the form x raised to r, where r is constant. Secondly, we have to find two linearly independent solution, that is phi 1 and phi 2. Find two linearly independent solutions for x greater than 0, and prove that they are linearly independent. And third number problem, find the two solutions phi 1 and phi 2 satisfying phi 1 of 1 is equals to 1, phi 2 of 1 is equals to 0, comma, phi 1 dash of 1 is equals to 1, phi 1 dash of 0 is equals to 0, phi 2 dash of 1 is equals to 1. See, this is a very important problem. This is actually basic problem, okay, which is for 10 marks and very important problem. This is very important problem. Now मी क्वेश्चन करतो त्याप्रमाणे द्यायचं. ॲक्च्युली वी शॅल सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. ॲक्च्युली दिस इज अ मॉडेल प्रॉब्लेम, and this model problem you have to solve the number of problems depending on this. यहाँ पे मैं खाली एक प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से इसको सॉल्व करके देता हूँ. आपको इसी तरह से अलग अलग के प्रॉब्लम सॉल्व करना है. आज संडे है, सबको सभी प्रॉब्लम सॉल्व के भेजना है. मैं देख रहा हूँ जो असाइनमेंट्स बच्चे भेज रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे असाइनमेंट्स नहीं भेज रहे, तो सभी को होमवर्क के साथ असाइनमेंट करना है. तो एक मैं मॉडल प्रॉब्लम ले रहा हूँ, इसी के आधार पे आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा. ये सभी कंडीशंस आपको उसी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो कंसिडर द इक्वेशन y dash plus 1 upon x into y double dash plus 1 upon x into y dash minus 1 upon x square into y is equals to 0. Now we have to solve this problem. मैं इस प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से सॉल्व करके देता हूँ. चलो रे स्टूडेंट्स, बताओ इस एग्जाम्पल की ऑर्डर क्या है, बताओ मुझे ऑर्डर. सभी स्टूडेंट को यहाँ पे ऑर्डर बताना है. सी दिस इज द होमोजेनियस differential equation with variable coefficients, because see this coefficient of y dash is 1 upon x, coefficient of y is minus 1 upon x square. That means we can say that this is the variable coefficient and this is the homogeneous differential equation, because the right side of that means b of x is 0. So we can say that this is a homogeneous differential equation. Okay, Mohini Kale, Pooja, Neha, Indraini, Saddam, Manisha. Okay, this is the homogeneous differential equation of order 2 with the variable coefficients. Variable coefficient 5, we can say that variable coefficients we have given here. A1 of x is equals to 1 by x. A2 of x is equals to minus, this is A1 of x is equals to 1 by x. A2 of x is equals to minus 1 upon x square.
these are the variable terms and such that x is greater than 0, and here a naught of x is equals to 1. See this, a naught of x is equals to 1 means this is the homogeneous differential equation of order 2. तो हमें क्या क्या करना है देखो, in the first step we have to show that there is a solution which is of the form x raised to r. जनरली हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा है, फर्स्ट चैप्टर में देखा है सॉल्यूशन जनरली कौन से फॉर्म में था, या तो e रेज टू x के फॉर्म में या तो साइन एंड कॉस के फॉर्म में. जनरली मैक्सिमम प्रॉब्लम में आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है ना, उसमें जनरली द मैक्सिमम प्रॉब्लम हैविंग अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ e रेज टू x or in the form of sin x or cos x if the roots are complex. But here in this case we have to show that the solution is in the form of x raised to r, where r is the constant. Also we have to show that both the solutions are linearly independent. That means we have to show that Wronskian of phi 1 and phi 2 which is not equals to 0. And third, we have to find out the particular solution according to these given conditions. Okay. अतः आप यहाँ पे सभी ने आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ये जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है मैं थोड़ा हटके तरीके से लेता हूँ, एक अलग तरीके से लेता हूँ, एक जनरल दूसरी मेथड से लेता हूँ, क्योंकि आप उसी मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो. एंड दैट मेथड इज टू कन्वर्ट this differential equation with variable coefficients into the differential equation in the constant coefficient. See this is very important and interesting method. देखो मैं ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग मेथड से लेने जा रहा हूँ. जो वेरिएबल कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम है उसे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट के प्रॉब्लम में लेके कन्वर्ट करते हैं. यानी कि वो जो सेकंड चैप्टर का जो भी प्रॉब्लम है वो हम अभी इस सेक्शन में आने वाले उसको हम फर्स्ट चैप्टर में कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने देखा है कि वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के प्रॉब्लम है, और मुझे पता है आप अच्छी तरह से कांस्टेंट कोएफिशिएंट के प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो. सो मैं इसको क्या करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस वेरिएबल कोएफिशिएंट प्रॉब्लम इनटू द कांस्टेंट कोएफिशिएंट प्रॉब्लम. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, सी दिस आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन differential equation is, see this is a linear homogeneous differential equation of order 2. Note that all these problems, our total syllabus is based on the linear differential equation. It may be homogeneous, it may be non-homogeneous. There is no any problem we have to solve in this syllabus based on the non-linear, because the solution method of the non-linear differential equation is not exist properly. Non-linear homogeneous non-linear differential equation असेल तर properly solution find out करण्याची आणखी मेथड नाही आहे. त्याच्यावर खूप संशोधन चालू आहेत, वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स खूप मोठ्या प्रमाणावर शोध होतोय त्यात. परंतु जे काही nth ऑर्डर आहे, हायर ऑर्डर नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन्स आहेत, त्यांचे सोल्युशन काढण्याचे प्रयत्न आहेत, ते रिसर्चचा भाग आहे. सो वी शॅल डिस्कस ओनली द लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. इट मे बी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर. इट मे बी होमोजिनियस, इट मे बी non-homogeneous, but all problems are based on the condition of the linearity. You note that. Okay, see this, given linear homogeneous differential equation of order 2 is, what is that, y double dash plus 1 upon x into y dash minus 1 upon x square into y, which is equals to 0. Now we can write this in the form, अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 0. दिस इज ऑफ द फॉर्म एल ऑफ वाई
which is equals to 0. Suppose this is equation number 1. अभी ये देखो, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल कोएफिशिएंट्स का है, यहाँ पे ये नॉट ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, ये नॉट ऑफ एक्स, ये 0 ऑफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, ये 1 ऑफ एक्स मीन्स एक्स, ये 2 ऑफ एक्स मीन्स -1. अगर याद रखना है, ऑर्डर के साथ अगर वेरिएबल सेम है, एक्स एक्स एक्स, अगर इस तरह से प्रॉब्लम है तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय कन्वर्टिंग वेरिएबल कोएफिशिएंट्स इनटू द कांस्टेंट कोएफिशिएंट. आप मेथड को याद अच्छी तरह से रखना है, और हर एक सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन कन्वर्ट वेरिएबल coefficients into the constant coefficient by using the proper substitution. So we have to put, see this, put x is equals to suppose e raised to z. Generally इथं जी common term आहे, see this, x plus 1 असेल, x plus 1 असेल, means x plus 1 bracket square double dash plus x plus 1 into y dash minus x minus y, whatever may be. अगर इस तरह से कर सेम टर्म्स है, एक्स एक्स वेरिएबल की जो भी कोएफिशिएंट है, अगर वो सेम है, टर्म सेम है, इंडेक्स कोई भी रहने दो, तो अगर टर्म सेम है और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो इंडेक्स 2 होना चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव है तो इसका इंडेक्स 1 होना चाहिए. अगर इसी तरह से है तो वी कैन पुट x इज इक्वल्स टू, और वेरिएबल टर्म, दैट वेरिएबल टर्म इज इक्वल्स टू, ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, पुट x इज इक्वल्स टू e रेज टू सद्दाम. ओके, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिटेल में लेता हूं. नाउ सो वी कैन राइट, कन्वर्ट दिस इनटू द, so we can write this x is equals to e raised to z, so we can write log x is equals to log e to the power z, means we can write z. So dz by dx equals to, what is the derivative of log x? चलो रे स्टूडेंट्स बताओ, what is the derivative of log x? dz by dx means 1 by x. Now we have to convert this problem. See this problem can be written as, एक मी इथं लिहितो, वाटलं तर एक स्टेप तुम्हाला लिहितो. ओके, नो प्रॉब्लेम. dz by dx equals to 1 by x. Now dy by dx, y dash means dy by dx can be written as, now dy by dz by the chain rule we can write dy by dz into dz by dx. This is the chain rule. Put the value dz by dx means we can write dy by dz into dz by dx means 1 upon x. So we get the value dy by dx, we can write, so we can write x into dy by dx, which is equals to dy by dz. So we can write x into y dash equals to dz by dy by dz. y dash means derivative with respect to y, याद रखना है यहाँ पे, y dash means derivative with respect to y, तो यहाँ पे derivative with respect to z है. नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे यही करता हूँ, x into dy by dx. Suppose this is equation number 2. अभी देखो, ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी है, मीन्स मिडल टर्म की वैल्यू हमने निकाल दी है x इंटू डी वाई बाय डी एक्स. यालाच असं सुद्धा म्हणतात, शॉर्टली वी कॅन राईट धिस ऑल्सो. हाऊ वी कॅन राईट, x इंटू कॅपिटल डी मीन्स dy by dx. Capital D is a notation used for dy by dx, which is equals to dy by dz can be represented by d1. Note that this is in the notation form. Note that d means the derivative with respect to x, d1 means the derivative with respect to z. Okay. Now we shall also find, so we can replace the middle term. Now we have to find out the value of first term, that is x square into d2y by dx square.
Now we know that dy by dx means, see this, now dy by dx means 1 upon x into dz by dx, sorry, dy by dx, dy by dz. अगेन d2y by dx स्क्वायर निकालना है आपको, d by dx ऑफ डिफरेंशिएटिंग बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. ये कॉमन प्रोसेस है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है. d by dx ऑफ dy by dx विच इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ 1 upon x into dy by dz. So use the product rule here. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है रे स्टूडेंट्स, बताओ, फर्स्ट बताओ. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स 1 अपॉन एक्स का, वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेकंड इज इट इज dy by dz प्लस सेकंड फर्स्ट इज इट इज मीन्स 1 अपॉन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy by dz का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो वो कैसे लेता है, देखो, d2y by dz स्क्वायर into, again we have to take the derivative with respect to z, dz by dx, that means minus 1 upon x square into dy by dz plus, you know that dz by dx means, dz by dx means 1 upon x, so 1 upon x into 1 upon x means 1 upon x square into d2y by dz square. ओके, बराबर है रे स्टूडेंट्स. अभी 1 अपॉन एक्स इसको कॉमन निकाल दो, सो दिस कैन बी रिटन एज d2y by dx square. So we can take 1 upon x square common and take it towards the left side, that is x square into d2y by dx square, x square into d2y by dx square, which is equals to, see this, we can write minus dy by dz plus d2y by dz square. Suppose this is equation number 3. This is as like x square into y double dash, x square into y double dash. ओके, आता याला शॉर्ट मध्ये असं पण लिहिता येतं, तुम्हाला माहित राहावं, x square into y double dash which can be written as, see this, d2y by dz square means d1 square minus dy by dz means d1. So it can be written as, d1 into d1 minus 1. इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कंटिन्यूअसली इन दिस वे, वेयर d1 मीन्स, नोट दैट, यहाँ पे नोट, यहाँ पे मैं खाली इधर लिखता हूँ नोट, d1 में d मीन्स d by dx, dy by dx, and d1 मीन्स dy by dz. अभी मैं ये आपको नोट में लिख देता हूं. अगर इसके हायर ऑर्डर है, इसके अगर हायर ऑर्डर होते हैं तो इस तरह से लिखना है आपको. यहां पे एक्स क्यूब इंटू वाई डबल डैश है, तो d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2. अगर x रेज टू 4 y ट्रिपल डैश, सॉरी y फोर्थ डैश है, और वी कैन राइट इट्स y फोर्थ डेरिवेटिव. सो d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2 इंटू d1 माइनस 3. इन दिस वे वी कैन रिप्लेस दिस. बट यहां पे हमारा प्रॉब्लम जो है तो सेकंड ऑर्डर का है, इसीलिए इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली हम सेकंड ऑर्डर एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. सो वी हैव कैलकुलेटेड एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर which is in terms of constant coefficient. Also we have calculated x into dy by dx which is in the terms of constant coefficient. So our differential equation 1 becomes, so therefore from equation 2 and 3
the differential equation 1 becomes, देखो अभी 1 means x square into y double dash means x square into d2y by dx square, and we have to put here x square into d2y by dx square. That means we have to put d2y by dz square minus dy by dx. So put this value d2y by dz square minus dy by dz. This is the value of x square into d2y by dz square. Again plus second x into y dash means x into y dash here. This can be written as, यालाच आपण असं लिहू शकतो, see this, x into y dash which is equals to dy by dz means which is d1, means x into d1 is equals to in this way. So we can write this as from this equation plus dy by dz minus, what is the last terms here, minus y, okay, which is equals to 0, minus y which is equals to 0. See this dy by dx plus minus get cancel, d2y by dz square minus y which is equals to 0. Actually this is a homogeneous, see this, important. Now this is a homogeneous differential equation in the form of z, in the form of z, which is so which is in the form of z. So we can also write L of z is equals to L of y which is equals to y double dash minus y which is equals to 0. Note that this is a differential equation in the form of z. Now the characteristics polynomial is in the form of z, in the form of z. So characteristics polynomial is p of r is equals to r square minus 1 which is equals to 0. So r square minus 1 is equals to 0. So it can be written as r square is equals to 1. So r is equals to plus or minus 1. So this is a homogeneous differential equation of order 2. So it has 2 roots. तर मला सांगा बरं आता याचं फायनल आन्सर काय असेल. Therefore r1 is equals to 1 and r2 is equals to minus 1. Therefore the roots of the complementary function or the roots of we can write root of the, therefore the required root of the differential equation is what is that, phi is equals to c1 phi 1 plus c2 phi 2. So c1 e raised to r1x, r1x, अभी यहाँ पे x नहीं लिखना है, आपको z में लिखना है r1z, because this is a differential equation of the form z. So we have to write this as r1 of z plus c2 phi 2 means e raised to r2z, but r1 and r2 is c1 e raised to z plus c2 e raised to minus z. But you know that z is, see this, z is our substituted variable. Actually given problem is in terms of x. हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो इन टर्म्स ऑफ x है. इसका मतलब आपको सॉल्यूशन x में ही निकालना है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन z में हो गया ड्यू टू द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन. सो रिवर्ट दैट सब्स्टिट्यूशन. अभी आपको रिवर्ट करना है सब्स्टिट्यूशन. वी हैव सब्स्टिट्यूटेड z इज इक्वल्स टू, सॉरी, x इज इक्वल्स टू e raised to z. So how can write, we can put the value of z as a log of x. चलो स्टूडेंट सी दिस. So phi is equals to, phi is equals to c1 e raised to z means log x plus c2 e raised to z means minus log x. See this. So it can be written as c1 e raised to log x
प्लस सी टू ई रेस टू लॉग ऑफ ई रेस, सॉरी यहाँ पे लॉग एक्स रेस टू -1। अभी देखो स्टूडेंट्स क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है देखो यहाँ पे log x इज ग्रेटर देन 0 है। सी दिस, सिंस हमें गिवन कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0 and every term which is included in the logarithmic function must be greater than 0, so we can take this, it is the correct. Now there is one formula, e raised to log of f of x होता है, तो उसका solution क्या होता है, f of x, because e and its log both are the inverse, reciprocal or inverse of the each other, so we can see this phi is equals to c1x plus c2 into x raised to -1. That can be written as, that is phi is equals to c1x plus c2 into 1 upon x. See this is the required solution of the differential equation. This is the required solution of the given differential equation. So the independent solutions are here. Two independent solutions are phi1 of x. Actually solution कैसा होता है देखो, c1 phi1 plus c2 phi2. So phi1 of x is equals to x and phi2 of x is equals to x raised to -1. अभी देखो हम हमारे मेन प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. See this, show that there is a solution of the form x raised to r. अभी देखो हमारे सॉल्यूशंस कैसे आए हैं, जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है phi1 and phi2, x raised to 1, x raised to -1 means r means यहाँ पे 1 है. So therefore the solutions is in the form, are in the form x raised to r, means x raised to 1, x raised to -1. So this completes the solution of or the condition of given problem 1. अभी हमें क्या करना है, second independent solutions. Now see this, we have to show that, prove that they are linearly independent. आपको दो solutions linearly independent निकालना है. अभी देखो हमारे पास दो solutions है phi1 and phi2. These are the two solutions, but we have to prove both are linearly independent. So now number second, now we have to prove linearly independent, we have what we have to show. सांगा रे स्टुडंट्स, आता जे ऑनलाईन आहेत मी प्रत्येकाचा आन्सर चेक करणार आहे आणि त्याचे स्क्रीनशॉट घेणार आहे, म्हणजे कोण आन्सर द्यायला लागले प्रत्येक क्वेश्चनचा आन्सर द्या. मला आता लिनियरली इंडिपेंडंट दाखवायचं म्हणजे काय करावं लागेल हे सांगा. नाउ यू टेल मी व्हाट वी हॅव टू डू which gives the result as phi1 and phi2 are the linearly independent. First सांगा रे चला. So we can write Wronskian of phi1 comma phi2 of x is equals to, चलो सभी को आंसर आना चाहिए ये, डिटर्मिनेंट ऑफ phi1 phi2 phi1 dash phi2 dash. So we can write, see this, phi1 means x, phi2 means 1 upon x, phi1 dash means 1, phi2 dash means, हाँ वेरी गुड सद्दाम. सद्दाम, अरे सद्दाम तुझं कॉलेज कोणतं आहे रे? सद्दाम मनसुरी तुझं कॉलेज कोणतं आहे? कॉलेज कोणतं आहे ते सांग, तुझा नंबर वगैरे सांग, डिटेल सांग, म्हणजे मी तुला ग्रुपमध्ये ॲड करतो. व्हेरी गुड, काही अडचण नाही. आपलं म्हणजे आमच्याच कॉलेजमधले असावे स्टुडंट्स, असं काही नाही, दुसऱ्या कॉलेजमधले असेल तरी ग्रुपमध्ये ॲड करू, कारण टीचिंग इज द प्रोफेशन, सर्वांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे, काय अडचण. नाव यू टेल मी सद्दाम, यू टेल मी विच इज युअर कॉलेज, देन आय विल ॲड इन आवर ग्रुप.
Okay, what is the derivative of 1 upon x? So we can write derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Now solve this determinant. X into minus 1 upon x square means minus x. 1 into minus 1 means 1 upon x. So which gives 2 upon minus 2 upon x. And here condition which is not equals to 0. Wronskian of phi 1 comma phi 2 of x which is not equals to 0. So we can take Wronskian of phi 1 comma phi 2 which is not equals to 0. So we can say that the two solutions linearly independent. Okay, बरोबर आहे सुप्रिया गाडेकर, हापसे, रवीना. Therefore the two solutions are linearly independent. Two solutions are linearly independent. Okay, now see this. अभी देखो हमें क्या करना है, थर्ड प्रॉब्लम क्या करना है. देखो थर्ड कंडीशन, find the two solutions phi 1 and phi 2 satisfying the solutions, two solutions phi 1 and phi 2. Phi 1 of 1 is equals to 1, phi 2 of 1 is equals to 0. Phi 1 dash of 1 is equals to 1, phi 2 dash of 1 is equals to 2. Okay, अभी हमें थर्ड की तरफ बढ़ना है. C, given that what we have given, see this, I shall discuss again. Phi 1 of 1, phi 1 of 1 is equals to 1, phi 2 of 1 is equals to 0. So we get, and also phi 1 dash of 1 is equals to 0, phi 2 dash of 1 is equals to 1. Now we have to find out the two particular solutions. We have phi 1 of x is equals to x and phi 2 of x, see this, phi 2 of x is equals to what? तर काय येतं पहा, phi 2 of x is equals to these values. So we can write this as a दिलेले. आता याचे डेरिव्हेटिव्ह काढा, याच्या व्हॅल्यूज ठेवा आणि व्हॅल्यूज ठेवून मग तुम्हाला सोल्युशन घेता येईल. आणि हा पार्ट तुम्हाला झालेला आहे. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह घेणे, ह्याचे कॅल्क्युलेशन करणे, हा पार्ट तुम्ही करू शकता, एवढं काही अवघड नाही. phi 1 of x, phi 2 of x च्या व्हॅल्यूज काढून कंडिशन काढा काय येतं बघा. C1 phi 1 प्लस C2 phi 2 या व्हॅल्यूज ठेवा आणि मग त्याच्यावरनं तुम्हाला व्हॅल्यू घेता येईल. नाऊ वी शॅल डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लेम. आता याच्यावरचाच बेस्ड जो दुसरा प्रॉब्लेम आहे, होमवर्कसाठी मी देतो, तुम्ही तो सॉल्व करा. होमवर्क, see this, x square, 1 minute, I shall give one problems based on the homework. Okay, first y double dash plus 1 upon x into y dash minus 4y which is equals to 0. Same conditions you have to solve. Same conditions you have to solve and you have to put the value that is okay. Now second, what is that second here? Second problem, x square, sorry, 1 minute. Okay, x square into y double dash minus 3x into y dash plus
4y which is equals to 0. 4y which is equals to 0. याचे रिपीटेड रूट्स येतील, पहा चेक करा तुम्ही, याचे रिपीटेड रूट्स येतील, सॉल्व करा. ओके, बरोबर आहे सद्दाम, काही अडचण नाही आहे. थर्ड, नेक्स्ट यू हॅव टू सॉल्व x cube into y double dash plus 2x square into y dash y triple dash y double dash plus 3x into y dash minus 3y which is equals to 0. See this, we have to use this condition. Okay, तर या तीन प्रॉब्लेमला तुम्ही चांगल्या पद्धतीने सॉल्व करा. नाउ लेट अस स्टार्ट. ठीक आहे स्टुडंट्स, आता आपण नेक्स्ट जो प्रॉब्लेम आहे, या टाईपचे सर्व प्रॉब्लेम्स आता तुम्ही सॉल्व करू शकता. परत आपण आज मी खूप वेळ तुमचा घेणार आहे, कारण बरेचसे प्रॉब्लेम्स आपल्याला घ्यायचे राहिलेत. तर आपण हा जो लेक्चर आहे, आणखी मी काय करेन, 11 ते 12 वाजता परत तुमचं 12ला 12 वाजता परत तुमचे लेक्चर्स असतील. याचा पुढचा पार्ट आपण तिथं कंटिन्युअस घेऊ. C1 C2च्या व्हॅल्यू काढून पर्टिक्युलर सोल्युशन काढ. 12 वाजता आता आपण आणखी याच्या पुढचे प्रॉब्लेम्स घेऊ. तर या ठिकाणी थांबू, आपण 12ला भेटू. लक्षात घ्या 12 वाजता परत लेक्चर असेल. आज 2-3 वेळा मी घेईन, म्हणजे मॅक्झिमम प्रॉब्लेमचा पार्ट संपवून टाकेन आज. ओके, नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. नमस्कार, गुड